we're gonna talk about the class 7 topic, that is nutrition in animals. This is chapter 2 of our science syllabus. Okay, so let's start. So this is our chapter, that is nutrition in animals. So firstly, topics to be covered. We will cover what is nutrition, modes of taking food of different organisms, nutrition in humans, nutrition in ruminants, grass eating animals, nutrition in amoeba. Okay, so let's start. Firstly, we will introduce about what is nutrition. Okay, so the mode of taking food by an organism and its utilization in the body is called nutrition. Animal get their food directly or indirectly from plants. We get our animal get their food from directly or indirectly from plants. Like here, you see, mm, the plant take the sunlight to make food, and the herbivorous animal eat that food, and the herbivorous animal is eaten by a carnivore animal, and then carnivore animal is eaten by us. So we are taking the nutrition indirectly from plants. Now, animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food, and its utilization in the body. So, एनिमल का जो न्यूट्रिशन उसमें न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, सबके बारे में पढ़ेंगे. द न्यूट्रिशन वी टेक द फॉर्म ऑफ अ फूड आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. जो न्यूट्रिएंट हम लोग लेते हैं अपने बॉडी में एज अ फूड, वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है. These complex substances can be utilized as such, so they as broke down into simpler substances. So ये जो होते हैं न्यूट्रिएंट, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, इनको यूटिलाइज किया जाता है, इनको ब्रोक डाउन, दे आर ब्रोक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. और हर प्रोसेस का एक नाम होता है, तो इस प्रोसेस के नाम को डाइजेशन बोलते हैं. यहाँ पर एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स components of food into simpler substances is called digestion. So that's our introduction part of this topic. Now we will study the main part of this chapter, mode of taking food, which we have discussed here, that we will discuss further in the chapter, that nutrient requirement, mode of intake of food. And here's our mode of intaking food. So different animals use different mode of nutrition. Like some name of the animal, like स्नेल कौन सा ग्रास खाता है, ये कौन सा फूड खाता है? ग्रास हो गया. उसका मोड ऑफ चीविंग कैसा है? तो वो चीविंग करता है, चिबाता है वो. एंड एक क्या खाता है? इंसेक्ट्स खाता है. और वो क्या करता है? स्क्रैपिंग करता है. सो दीज आर द डिफरेंट names of the animals, their kind of food they eat, and here the mode of feeding, how they eat. Like mosquito, what food does the mosquito eat? That is blood. And the mode of eating is the sucking. Snake, small animals खाता है वो. और mode of eating कैसा? Swallowing. Now we will understand the digestion in humans. Okay, the organ that are included in the whole digestive process are together forms the digestive system. So नीचे में आपका जितना भी नाम दिया हुआ है वो सब डाइजेशन में हेल्पफुल होता है. फर्स्ट आपका हो गया बकल कैविटी, नेक्स्ट आपका हो गया एसोफेगस, थर्ड आपका हो गया स्टमक, फोर्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन, सिक्स इज रेक्टम, एंड सेवेंथ इज anus. Okay, and here's the juices
which helps to utilize that complex substances into simpler. Okay, now talking about these, here you see, here you can see the food we eat enters from the mouth, and in the mouth there are salivary glands which uh, which help them to reach to the esophagus, and the esophagus helps the food to reach to the stomach, and here the food arrives. And here what happened, the food get several enzymes which utilize them into simpler form, and then they get utilized easily. Now talking about the first part of our digestion, that is mouth and buccal cavity. So माउथ एंड बकल कैविटी में होता क्या है, जो हमारा माउथ होता है उसमें सेवरल जो है दांत होते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ वी हैव, जैसे इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स. तो बेसिकली होता क्या है, जो फूड होता है जो हम लोग खाते हैं वो थ्रू द माउथ जाता है हमारे एसोफेगस में जाता है, लेकिन उससे पहले जो प्रोसेस होता है टेकिंग ऑफ फूड का, उसको क्या बोलेंगे, इंजेक्शन. हियर यू कैन सी स्कॉप नोट्स, कॉपी में लिख लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा. एंड देन द बकल कैविटी इंक्लूड्स टीथ. ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया 4 तरह के दांत होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स. And if we talk about teeth, which chew the food and break down mechanically into small pieces by the teeth. Each tooth is rooted in the separate socket in the gums. In a human life, 2 sets of teeth grow. One is milk teeth, has during the birth, but fall down after a certain age. At another one is permanent teeth, remains for the whole life. तो 2 तरह के दांत होते हैं हर ह्यूमन बीइंग में. पहला होता है मिल्क टीथ, जो उसके बचपन में होता है, फिर उसके बाद एक सर्टेन एज पे टूट जाता है, फॉल डाउन हो जाता है. दूसरा होता है परमानेंट टीथ, जो कि उसका रिमेन होल लाइफ, पूरा होल लाइफ तक रिमेन रहता है. और here there are 4 types of teeth to perform different functions. These are incisors. Incisors are 8, 4 here, 4 here, and canines are 2, 2 here, 2 here lower, and premolars 2, 2 in the upper, 2 in the lower, and molars 3, 3 in the upper, 3 in the lower, and it makes 32 teeth. Okay, let's talk about the properties of these teeth. So first of all, incisors. What the incisors help? Incisors help in biting and cutting the food. ये incisors जो होते हैं वो हमें बाइटिंग और कटिंग ऑफ द फूड करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं. इफ यू टॉक अबाउट कैनाइंस, these are help in parsing and tearing the food. ये parsing और food को tear करने में काम आते हैं. If you talk about premolars and molars, helps in chewing and grinding the food. आज मेरा तबीयत खराब है, that's why मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ. So next is tongue. Let's talk about it. So it's a fleshy muscular organ, helps to mix the food with saliva and swallow the food. Our tongue has different taste buds to detect the tastes, different tastes of food. Here you can see sour, different taste buds are here.
sour, salty, sweet, salty, sour, bitter. We can taste different things by our different types of taste buds. Now, salivary gland. Talking about the salivary gland, it secretes saliva, which helps in the breakdown of starch into simpler form. तो जो सैलिवरी ग्लैंड है उसका काम क्या है, ये सलाइवा सेक्रेट करता है जो कि स्टार्च को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देता है. नेक्स्ट इज एसोफेगस और द फूड पाइप. सो एसोफेगस क्या करता है, वो एक पाइप है, एक नली है जहाँ से फूड जाता है. जैसे एक फूड है, ये जा रहा है एसोफेगस से, चला गया कहाँ, स्टोमक में. सो क्या हम लोगों ने सीखा, द फूड पाइप passes along the neck and the chest. The swallowed food is pushed down by the movement of the walls of the food pipe into the stomach. ये एसोफेगस क्या करता है, फूड को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है. वेयर, टू द स्टमक. नाउ द स्टमक. About the stomach, it is the widest part of the alimentary canal. It is a thick walled bag like shaped like a fattened J. The secretions of the stomach are, stomach में क्या क्या secrete करता है, तो mucus protects the lining of the stomach from the acid. हमारे स्टोमक में बहुत सारे एसिड होते हैं जिसको स्टोमक के लाइनिंग को खराब होने से कौन बचाता है, तो होता है म्यूकस. इफ यू टॉक अबाउट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, it kills the bacteria that enter along with the food and makes the medium acidic and help the digestive juices to act. If you talk about digestive juices, what are the work, that they break down the protein into simpler pieces. Now let's talk about the small intestine, that it is the longest part of the alimentary canal, okay? Canal of about 7.5 meters long. Its walls secrete intestinal juices and it receives the secretions of liver and pancreas. Liver. It is reddish brown in color. It is the largest gland in the body. It secretes bile juice, which is stored in a sac like called gallbladder. Bile helps in digestion of fats. तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, ये क्या सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंटरी कैनाल, जो कि 7.5 मीटर लॉन्ग है, और इट्स वॉल सेक्रेट्स इंटेस्टिनल जूसेस and it receives from the secretion of liver and pancreas. अब liver और pancreas के बारे में पढ़ते हैं. तो liver कैसा है, it is a reddish brown in color and it is the largest gland in the body. ये बहुत बड़ा gland है, पूरे body में रहता है. It secretes bile juice. ये क्या secrete करता है, bile juice. From where, from a sac-like structure which is also called as gallbladder. और बाइल करता क्या है, उसका काम क्या है, तो बाइल जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट के डाइजेशन में जो बाइल जूस है वो हेल्प करता है. Now if we talk about pancreas, it is a cream colored gland located just below the stomach. It is a colored gland located just below the stomach. तो ये पैंक्रियास क्या होता है, ये क्रीम कलर्ड ग्लैंड होता है जो कि स्टोमक के बिलो में लोकेट होता है. ओके, नाउ इट सेक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस. ये क्या सेक्रेट करता है, पैंक्रियाटिक जूस विच एक्ट्स ऑन कार्बन
carbohydrates, fats and proteins and changes them into simpler forms. तो ये पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म में यू चेंज कर देता है, ठीक है। अब जो रिमेनिंग फूड बचता है ये किससे डाइजेस्टेड होता है, इज डाइजेस्टेड बाय इंटेस्टिनल जूस at lower part of the small intestine. Now, the digestion process completes here and the carbohydrates get broken into glucose, proteins, amino acids and fats into fatty acid and glycerol. Okay. Absorption of the digested food in small intestine. अब जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल होता है, हियर यू कैन सी, ये क्या करता है, सारे चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जितना भी डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन एब्जॉर्ब करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल, विच इज rich in blood vessels. This process is called absorption. The small intestine have several finger-like projection, okay, called villi. Rich in blood vessels, the villi helps to increase the surface area for absorption. The absorbed materials are carried by the blood to different parts of the body and used by the body. This is called assimilation, okay. The undigested food then passes into the large intestine. तो इसमें क्या होता है, जितने भी डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन absorb कर लेता है. Now if you talk about the large intestine, it is about 1.5 meter in length and it absorbs water and some salts from the undigested food. Okay. Undigested food materials. Rectum. The remaining food waste passes into the rectum and remains there as semi-solid feces. ओके, जो रेक्टम होता है ये क्या करता है, जितना भी रिमेनिंग वेस्ट है वो कहाँ जाता है, तो वो चल जाता है हमारे रेक्टम में. एनएस, एनएस क्या होता है, द फेशियल fecal matter is removed through the anus. This is called ejection. जितना भी रिमेनिंग पार्ट होता है, वेस्ट पार्ट होता है, वो किसके थ्रू निकल जाता है, एनस के थ्रू. And we have completed the part 1 of our chapter. In part 2 we will discuss about digestion in eating grass animals, feeding and digestion in amoeba. So अब तक के लिए इतना ही. Thanks for watching this class and we will meet again in our next live class. Thank you. And हाँ, ज़रूर से जितने भी नोट्स है उसको लिख लीजिएगा फिर से वीडियो को देख के. थैंक यू.